बच्चों, एटीएम के बारे में तो आपने सुना ही होगा या देखा भी होगा या यूज़ भी किया होगा मम्मी पापा के साथ जाके या खुद जाके, अगर आपके पास बैंक अकाउंट और डेबिट कार्ड है तो। एटीएम क्या है? एक ऐसी मशीन जो सर पैसा देती है। पैसा कब देती है? अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो उसी पैसे को आप एक मशीन के थ्रू विड्रॉ कर सकते हैं रादर देन गोइंग टू द बैंक एंड स्टैंडिंग इन द क्यू। दिस इज एटीएम। इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए समझते हैं इसे, रीड करते हैं इसके बारे में। An ATM is a short way to say automated teller machine. It's a special machine that has money inside it and lets the bank customers make cash withdrawals and check their accounts balances without the need to go into the bank. Many ATMs also allow people to deposit cash. ओहो, कुछ ATM ऐसे भी होते हैं जैसे ICICI बैंक है, आपको चेक डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट करने का भी ऑप्शन देता है। तो एटीएम सिर्फ और सिर्फ कैश विड्रॉल के लिए नहीं, बहुत सारे पर्पसेस सॉल्व करता है एटीएम। आपका बैंक बैलेंस क्या है दिखाता है, आपका मिनी स्टेटमेंट निकाल के दे सकता है, आपका कैश डिपॉजिट कर सकता है, चेक डिपॉजिट कर सकता है। तो वेरियस फंक्शंस होते हैं एटीएम के। ओके, दिस इज द केस। ऑलराइट, कभी आपने सोचा है या क्या आपको याद है कि जब भी आप एटीएम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले कुछ नंबर मांगता है आपसे? क्या होता है वो? पिन नंबर मांगता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जो सिर्फ आपको पता रहता है और आपको ही पता रहना चाहिए अगर आप अपना खुद का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो। अ पिन इज लाइक अ स्पेशल सीक्रेट पासवर्ड made up of numbers that you input into an ATM to tell the bank that it's okay to do the transaction you are asking for. अब जैसे ही वो पिन को एंटर करते हैं तो आप ऑथराइज करते हैं बैंक को कि यस, ये ट्रांजैक्शन आप मेरे बिहाफ में कर दीजिए। ठीक है, और बैंक भी कहीं ना कहीं ये चीज़ जान रहा होता है। एटीएम मशीन का जो भी मैकेनिज्म होता है उसके थ्रू बैंक को ये पता चल जाता है, अगर आप ये पिन डाल रहे हैं इसका मतलब आप ही वो व्यक्ति है जो ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मतलब क्या होगा अगर ये पिन किसी को पता चल गया तो? बैंक थोड़ी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन पैसे निकाल रहा है, वो तो पिन से ही आइडेंटिफाई कर पाएगा ना। तो इसलिए आपका पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट टेल योर पिन टू अदर पीपल, इफ यू डू दे कैन टेक योर मनी। यस। अब चलिए एटीएम से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। डिड यू नो John Shepherd Barron, inventor of the ATM, originally intended them to have pins that were 6 digit long. John Shepherd Barron, इन्होंने पिन को इन्वेंट किया था, एटीएम को इन्होंने ही इन्वेंट किया था, और एटीएम के इन्वेंट करते करते इन्होंने मैकेनिज्म जो लाया था कि पिन होना चाहिए इसमें, तो इन्होंने शुरुआत में ये सोचा था कि 6 डिजिट का पिन होना चाहिए, लेकिन his wife could only remember 4 digit at a time, so that became the standard. लेकिन उसकी वाइफ सिर्फ 4 डिजिट ही रिमेंबर कर पाती थी या कर सकती थी, तो उसने ये 4 डिजिट का ही पिन बनाया और यही आज स्टैंडर्ड बन गया पूरी दुनिया में। हाउ डू बैंक फंक्शन? बच्चों, अभी तक तो हमने ये देख लिया कि हम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, वेरियस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं बैंक से, वेरियस प्रकार की सर्विसेज मिल सकती है, लेकिन बैंक कैसे चलता होगा? सिर्फ इन सब चीज़ों से चलता होगा और छोटे मोटे चार्जेस सर्विसेज के आपसे लेके? ये तो बहुत छोटा पार्ट हुआ बैंक का। बैंक कैसे काम करता है? मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए आइडल पड़े हुए हैं, आपने वो 1 लाख रुपए आके बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसके बदले आपको बैंक सपोज इंटरेस्ट रेट देता है 5% का, मतलब ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। अब यही 1 लाख रुपए बैंक किसी और नीडी पर्सन को दे देगा जिसको इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। ओके, लेकिन बैंक उससे कितना चार्ज करेगा? आपसे जो उनका एग्रीमेंट हुआ है बैंक का कि 5% देगा, तो ऑब्वियसली बैंक हमेशा 5% से ऊपर चार्ज करेगा ताकि डिफरेंस बैंक की इनकम हो जाए। मान के चलिए बैंक सामने वाले को देता है, लैंड करता है मनी फॉर द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, तो ये बीच का जो 5% डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है? आपकी इनकम, आप मतलब बैंक की इनकम। ठीक है। How do bank function? We deposit saved money into the bank. When people borrow money from bank, it lends them the
money. However, people who borrow money from bank have to repay the amount. अब जिसने borrow किया उसको obviously पैसा तो लौटाना ही होगा, obviously. How do bank function? Bank receives a fee for lending money, that's called interest. In return for you keeping your money in your account where they can use it to lend, the bank will also pay you interest over time. आपको भी ब्याज समय समय पे मिलता रहेगा. Interest. Interest is money the bank pays you for letting them look after your money. आपको इंटरेस्ट क्यों मिलता है? क्योंकि आपका पैसा बैंक इस्तेमाल कर सकता है. ठीक है? It's a kind of a reward for you not spending your money. The more money you put in the bank and the longer you leave it there, the more interest you will get. मान के चलिए 1 लाख रुपए आप 1 साल के लिए छोड़ते हैं बैंक में, तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5% सपोज. वही 1 लाख रुपए आप 10 साल के लिए छोड़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट 7% भी मिल सकता है, 8% भी मिल सकता है. क्यों? क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा समय होगा आपके पैसे को इस्तेमाल करने का. यही फंडा है बैंक के इंटरेस्ट रेट का. ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं शानदार से वीडियो को जहां पे बैंकिंग को बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझाया गया है. Hello CA final student friends, we have a very good offer. The international banking system is an enigma. There are more than 30,000 different banks worldwide and they hold unbelievable amounts of assets. The top 10 banks alone account for roughly 25 trillion US dollars. Today, banking can seem very complex, but originally the idea was to make life simpler. 11th century Italy was the center of European trading. Merchants from all over the continent met to trade their goods, but there was one problem: too many currencies in circulation. In Pisa, merchants had to deal with 7 different types of coins and had to exchange their money constantly. This exchange business, which commonly took place outdoors on benches, is where we get the word bank from the word banco, Italian for bench. The dangers of traveling, counterfeit money, and the difficulty of getting a loan got people thinking. It was time for a new business model. Pawnbrokers started to give credit to businessmen, while Genoese merchants developed cashless payments. Networks of banks spread all over Europe, handing out credit even to the church or European kings. What about today? In a nutshell, banks are in the risk management business. This is a simplified version of the way it works. People keep their money in banks and receive a small amount of interest. The bank takes this money and lends it out at much higher interest rates. It's a calculated risk because some of the lenders will default on their credit. This process is essential for our economic system because it provides resources for people to buy things like houses or for industry to expand their businesses and grow. So banks take funds that are unused by savers and turn them into funds society can use to do stuff. Other sources of income for banks include accepting saving deposits, the credit card business, buying and selling currencies, custodian business, and cash management services. The main problem with banks nowadays is that a lot of them have abandoned their traditional role as providers of long-term financial products in favor of short-term gains that carry much higher risks. During the financial boom, most major banks adopted financial constructs that were barely comprehensible and did their own trading in a bid to make fast money and earn their executives and traders millions in bonuses. This was nothing short of gambling and damaged whole economies and societies. Like back in 2008, when banks like Lehman Brothers gave credit to basically anyone who wanted to buy a house and thereby put the bank in an extremely dangerous risk position. This led to the collapse of the housing market in the US and parts of Europe, causing stock prices to plummet, which eventually led to a global banking crisis and one of the largest financial crises in history. Hundreds of billions of dollars just evaporated. Millions of people lost their jobs and lots of money. Most of the world's major banks had to pay billions in fines, and bankers became some of the least trusted professionals. The US government and the European Union had to put together huge bailout packages to purchase bad assets and stop the banks from going bankrupt.
New regulations were put into force to govern the banking business. Compulsory bank emergency funds were enforced to absorb shocks in the event of another financial crisis. But other pieces of tough new legislation were successfully blocked by the banking lobby. Today, other models of providing financing are gaining ground fast, like new investment banks that charge a yearly fee and do not get commissions on sales, thus providing the motivation to act in the best interests of their clients. Or credit unions, cooperative initiatives that were established in the 19th century to circumvent credit sharks. In a nutshell, they provide the same financial services as banks, but focus on shared value rather than profit maximization. The self-proclaimed goal is to help members create opportunities like starting small businesses, expanding farms, or building family homes while investing back into communities. They are controlled by their members, who also elect the board of directors democratically. Worldwide, credit union systems vary significantly, ranging from a handful of members to organizations worth several billion US and hundreds of thousands of members. The focus on benefits for their members impacts the risk credit unions are willing to take, which explains why credit unions, although also hurting, survived the last financial crisis way better than traditional banks. Not to forget the explosion of crowdfunding in recent years. Aside from making awesome video games possible, platforms arose that enable people to get loans from large groups of small investors, circumventing the bank as a middleman. But it also works for industry. Lots of new technology companies started out on Kickstarter or Indiegogo. The funding individual gets the satisfaction of being part of a bigger thing and can invest in ideas they believe in, while spreading the risk so widely that if the project fails, the damage is limited. And last but not least, microcredit. Lots of very small loans, mostly handed out in developing countries that help people escape poverty. People who were previously unable to get access to the money they needed to start a business because they weren't deemed worth the time. Nowadays, the granting of microcredits has evolved into a multi-billion-dollar business. So banking might not be up your street, but the bank's role of providing funds to people and businesses is crucial for our society and has to be done. Who will do it and how it will be done in the future is up for us to decide though. ऑलराइट, तो देखा बच्चों कितना इम्पॉर्टेंट होता है बैंकिंग हमारे लिए। बैंकिंग हमारे इकोनॉमी के लिए भी कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बैंकिंग उन लोगों को, उन ज़रूरतमंद लोगों को पैसा प्रोवाइड करता है जो कि देश में कुछ काम कर रहे होते हैं और वो काम करके कुछ रेवेन्यू जनरेट करते हैं और वो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। मतलब वो पैसा कमाते हैं और वो पैसा कमाने के लिए कोई और लोगों की हेल्प लेते होंगे जो उन्हें गुड सप्लाई करते होंगे या जिनसे वो सर्विसेज लेते होंगे, मान के चलिए एम्प्लॉयज़। तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है ज़रूरतमंद को अगर पैसा दिए तो। ऑनेस्ट और जेन्युइन लोगों को अगर पैसा मिले बैंक के द्वारा तो उनको बहुत हेल्प मिलती है। तो बैंकिंग बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। आपने इसी के साथ साथ इस वीडियो में देखा कि बैंक को एलिमिनेट करके भी आजकल नए तौर तरीके आ गए हैं जिसकी मदद से आपको पैसा मिल सकता है। क्राउड फंडिंग एक हमने पॉइंट देखा। ओके, चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक ले जय हिंद बच्चों।